Okay, so we are going to start with new chapter today, and that is work, power, energy, and collision. Work, energy, power is better to say because work and energy they are same physical quantities dimensionally at least. Work, energy, power, and collision. लास्ट 2 साल से इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. 2019 में good amount of questions were asked on this topic. 2020 also in this year good amount of questions were asked. So we need to do this topic very well, and there's not much that you will need here. जो मॉड्यूल्स है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है और उसमें से 80% हमको यूज करना है and remaining 20 we'll just skip. So we'll start with basic definition of work. What do you mean by work? Force into displacement. When a force applied to a body produces displacement, then it is said that the force has done work. Okay, can you quickly tell me what are the dimensions of work? Quick, you should be very quick on this. M1 L1 T minus 2 M1 L2 T minus T minus 2, m1 l2 t minus 2. And what are the units of this? You should be very quick. Yes, you should be very quick on this. First न्यूटन मीटर, ये एक हो गया. जूल ये दूसरा हो गया. और वर्क इज एनर्जी मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, right? SI unit. Then this SI this system of units is divided into two different categories. One is called as absolute and other is called as gravitational. Yes, come inside. Good morning. Right. In absolute unit, joule, in SI system, joule is called as absolute unit. How do you define 1 joule of work? when force of 1 Newton produces displacement of work 1 Yes. So when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter, then it is said that there is 1 joule of work done. In absolute units, so there are two types of units, absolute and gravitational. Second type of absolute unit is kg meter. What is kg meter? This is of course SI system of units again. When 1 kilogram weight of force produces a displacement of 1 meter, that is called as 1 kg meter, right? So how do you convert 1 kg weight into Newton? 1 kg weight into Newton. Mass into G is weight. तो जब मैं बोलता हूँ 1 kg WT, मतलब मैंने मास के लिए 1 kg डाला है लेकिन G के सब्स्टिट्यूट नहीं की है. तो 1 kg weight is nothing but 1 into 9.81, right? और into 1 meter है, मतलब 1 kg meter is 9.81 Newton, right? करेक्ट? करेक्ट है? नहीं. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि न्यूटन तो बोला मैंने, मीटर नहीं बोला है ना. वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू न्यूटन और मीटर भी है साथ में. तो 1 kg मीटर
is equal to 9.81 जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर इज जूल. अभी आपने बोला वो, राइट? करेक्ट. तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए दैट वर्क डन इज 1 kg मीटर, so you need to remember that you have to multiply by 9.81 to convert it into joules. Okay, right. Then second type of units, gravitational units. By the way, ये gravitational unit है. Absolute, there are two types. One is joule. Absolute में दो टाइप, ग्रेविटेशनल में दो टाइप. डजंट मैटर इफ यू डोंट रिमेंबर नेम्स. तो एब्सोल्यूट में पहला टाइप देखा हमने जूल, ग्रेविटेशन में फर्स्ट टाइप देखा हमने 1 kg मीटर. यहाँ पे दूसरा है विच इज इन CGS सिस्टम. व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम? अर्ग. हाउ मच इज 1 अर्ग? 10 raised to minus. नहीं वो ठीक है, बट when one dyne of force produces a displacement of 1 centimeter, so that is 1 erg, right? करेक्ट. तो एब्सोल्यूट में दो, एक SI में, एक CGS में. ग्रेविटेशनल में भी दो, एक किलोग्राम मीटर, एंड कैन यू गेस व्हाट विल बी इन CGS? ग्राम सेंटीमीटर. So 1 gram centimeter of work is nothing but when 1 gram weight produces a displacement of 1 centimeter, right? So how much is 1 gram weight? हमको ये देखना है. You can convert it from 1 gram centimeter to 1 kilogram meter, या फिर directly you can go into CGS units, erg, या फिर you can directly go into Newton meter, that is joule. आपके ऊपर है, कन्वर्ट आप कर सकते हो. ओके. एनीवेज, हाउ मच इज 1 ग्राम इन किलोग्राम? 10 raised to minus 3, राइट? तो ये हो गया किलोग्राम WT. हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर्स? 10 पावर माइनस 2, मतलब ये आ गया -5 kg WT और बाद में मीटर. मतलब बेसिकली ये आ गया आपका 10 raised to minus 5 kg मीटर. तो 1 kg मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 पावर माइनस 5, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर. तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट. You can directly go to erg, you can directly go to joules if you want. Okay, good. लिखना है तो लिख लो. कन्वर्जन कैसे किया, you should know this if you want. Those who are online live, if you want, you can just take screenshot, or this PDF will anyways be made available. If you want to make some specific note, you can make notes. कन्वर्जन पता होना चाहिए, एंड इट्स नॉट अ बिग डील. सिर्फ किलोग्राम मीटर में, किलोग्राम वेट में, वेट जब बोलते हो तो जी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क. Types of work. So we can have positive work, or we can have negative work, or we can have zero work. So taking an example will define what is positive work, what is negative work, and what is zero work.
So positive work, suppose I have a block which is kept on a horizontal surface. I am not talking about friction at this point of time. We will bring in friction as and when required. This is horizontal. Let's apply a force at some angle theta with respect to horizontal. So let's say this is force F, which is applied at an angle theta with respect to horizontal, right? In such case, if the displacement is here S bar and this is F bar, so direction of force and displacement is the same. In such cases, work done is said to be positive. And why is it said to be positive? Acute angle, because इस केस में आप देखोगे what is the component of force, मतलब projection of force on displacement, what is component of force on S bar. And if you remember, do you remember what was component of force? What is projection of A bar on B bar? याद है क्या? A cos theta आया था. Good. मतलब F cos theta, मतलब F cos theta is the component which is responsible to bring in displacement, right? Since angle is acute, cos of acute angle is positive, and hence work done here is basically positive because of the angle. Or in short, you can say the component of force is in the direction of displacement, hence the work done is positive. So positive work. दूसरा है negative work. Okay, so as you have defined positive work, similarly you can define negative work also. So how to define negative work is a simple task again. What we can do is, right, तो हमारे पास जो force है which is applied on this block is something like this, right? And now the angle that we define theta will be obtuse, the angle between force vector and displacement will be obtuse, and in this case component of force will be opposite to what? Displacement. मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे आएगा, what component it will be? F cos या F sin minus F cos. So this will be minus F cos. That is important. How it is minus F cos? Why did I write minus F cos? What is this angle? 180 minus theta. Okay, तो ये कंपोनेंट जब देखूंगा मैं, it will be F cos of 180 minus theta. What is cos of 180 minus theta? Minus cos theta. So basically you are writing F cos of 180 minus theta, which is minus F cos theta. So negative आ गया. So in this case work done is F bar dot S bar, which is minus F cos theta S. So work done is negative. मतलब the component of force is anti-parallel to displacement, right? Good. थोड़ा slow जा रहा हूँ क्योंकि I want you to understand each and every step. When will we work zero? Any guess? Work done is cos theta zero का मतलब angle
90 डिग्री पे. So when force and displacement are perpendicular to each other, then work done is said to be zero. Now do you remember, so I will just say F bar perpendicular to S bar, which means W is 0 because theta is 90. Do you remember in uniform circular motion, अगर theory अच्छे से पढ़ा होगा तो बुक, वहां पे एक वर्ड है, work done by centripetal force is 0. कैसे? work done is work done by a centripetal force is 0. Displacement is circular motion में you talk about angular displacement. मुझे एक बात बताओ, if you have a particle performing circular motion in xy plane, where is displacement? थीटा का डायरेक्शन क्या होता है? z डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, बराबर. और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर. और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर. हो गया कि 90 डिग्री एंगल. दैट इज व्हाई यू से the work done by centripetal force is 0. It is because of that fact, right? Good. So you should know such things. It is important to know. Then okay, so what else do we need in this chapter? We will need methods to find work done by a force. So we need different methods of work done by a force. पहला तो बहुत easy है. First is work done by a constant force. Work done by a constant force. Can you tell me what is the formula for work done by a constant force? What do you mean by constant force? Force at any point during the motion of an object is constant. मतलब if you draw a graph of time against force, it will always be a straight line parallel to time axis because the force is not changing. So in this case, without going into detail, work done W is always F bar dot S bar, which is Fs cos theta, right? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब एंगल 0 हो गया, तो F into S, राइट? एंटी पैरेलल हुआ तो माइनस Fs, दैट इज फाइन. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो आपने 11th में पढ़ना चाहिए बट बहुत सारे बार स्किप हो जाता है, work done by a variable force. By the way, before I go into what is work done by a variable force, I would like to ask you a simple question so that you know how to find out work done from graph. Let me take two axes. This is displacement axis, this is force axis. Let us say I have a force something like this. Okay, so I have a force something like this. What is some value? Of course, some value. Let us say 10 Newton. Let us say some value 5 meter. What is work done in this case? 50, right? Good. Matlab, if you think physically, what is happening physically? Physically, I have a block which was initially, let us say, at rest.
Then we apply a 10 Newton force on this, and the body gets displaced by 5 meter. Assumption is that at any instant of time, the force always remains 10 Newton. So in this case, work done is 50, but 50 watt? Joule or 50 watt? आपने बोला 50 जूल, मैंने अगर न्यूटन लिखा तो जूल, right? Then let me ask you a question now. What is work done by the force in displacing the body from point A to B? What is work done in this case? Integration. ऐसे केसेस में प्रॉब्लम ये होता है that the function is not well defined. It is not a straight line, right? So you cannot find out work done from A to B without making use of integration. Let us say initial position was x1 or s1, doesn't matter if you are denoting displacement by x or s, कोई फर्क नहीं पड़ता. Final position is x2. What do we do in such cases is हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? Because if you look at any of this piece, so small displacement, in this case it is approximately a rectangle, and area of rectangle can be found out. So you say that split the whole curve into small displacements, dx 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 dx, and then add over all the dx. क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में रखा है, and each piece is roughly dx dx dx. तो मैं हर एक स्मॉल स्मॉल एरिया को ऐड करते जाऊंगा, मतलब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं. मतलब इन दिस केस work done W is given by integration from x1 to x2 f bar dot ds या फिर dx, क्योंकि x से डिनोट किया तो dx bar. क्लियर? यहां तक क्लियर? इजी? गुड. रिमेंबर, मैंने यहाँ पे वेक्टर नोटेशन लिखा है. I want you to know vector notation because other way क्या होता है कि they just remove bar from here and bar from here and dot भी निकाल देते हैं, तो f dx. But not necessary बोल सकते हैं ना. At some point the force was making angle of 30 degree, at other point the force was making angle of 45 degree. So that is why it is important for you to always write this in terms of vector notation. Is this clear? Good. If it is clear, then we can go to third topic, work done by conservative and non-conservative forces. मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताया था in some of my last lecture, I don't remember which one, that what is a conservative force and what is a non-conservative force. I remember very well. मैंने with example बताया था ये. So do you remember what is a conservative force? What is a conservative force? You should know what is a conservative force. Path independent. What path independent? What path independent? हाँ लेकिन exactly, but she said path independent. What is path independent? Force is path independent. Work is path independent.
work is path independent, right? So in conservative force, for example, इस रूम में से मैं एयर निकाल देता हूं एंड देन मैं फ्लोर से एक ऑब्जेक्ट उठा के टेबल पे रख रहा हूं. आई कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन, so this is initial position, this is final. I can do this the same work in many ways. मैं इस पाथ से जा सकता हूं, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं. I can take n number of paths, right? So work done in this case is path independent. मतलब doesn't matter which path you are taking, the work done is always going to be same. Such forces in which or due to which work done is path independent is called as conservative force, or these forces are called as conservative forces. What is important is in such cases मैंने air बाहर क्यों निकाला था? There should not be resistance, मतलब there should not be loss of energy due to friction or any other resistive forces. Is it clear? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये जैसे कान में पड़ा, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब देयर आर नो अपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्सेस. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, राइट, गुड. सो इट इज सिंपल. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल नाउ. लेट मी से ए टू बी हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है. पहले मैं गया इस पाथ से, right? Okay, then I can take any path I want. I can go from this path to this path, straight line. I can do this way also, right? So work along path 1, path 2 or path 3 is the same. So work done from path A to B, work done from path 1 equal to work done along path 2 equal to work done along path 3. Clear? Good. In such cases, you should know work done from A to B plus work done from B to A is equal to 0, क्योंकि मैंने सिर्फ A से B और B से A वापस आया है, right? So what you can say is work done by a force in a conservative field, right? और ये क्या है? साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है ना? A to B, B to A. So you can say work done in a conservative field along a closed loop is 0. A से B गया, B से A आया. ये सिर्फ कंजर्वेटिव में ही होता है. मतलब क्या? मतलब मैं ग्राउंड से टेबल पे जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूं A से B, और वापस से B से A में किसी भी पाथ से आ सकता हूं. The work done is still the same. I can take any path I want, right? But initial point and final point should remain same. Okay, good. इस पे questions आते हैं, so you will know why. And of course you will have a rough idea about what is non-conservative force. What is non-conservative force? Path dependent. So I'm not going to talk about it because then I'll have to talk about friction. So we'll do it when solving numericals. Then we need to talk about energy now. What do you mean by energy? What do you mean by energy? ये तो रियल लाइफ में यूज करते हो आप, बार बार यूज करते हो. What is basic definition of energy? अरे एंजॉय करो फिजिक्स को, नीचे मत देखो. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट एनीवन, बट इन जनरल आपने दिन भर काम किया, ओके, दिन भर काम किया, सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक काम करते रहे,
विदाउट स्लीपिंग। फिर मैंने बोला कि अभी जाओ, वो एक ट्रक है उसमें सामान भरा हुआ है, उतार के लाओ, करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? आप बोलोगे कैपेसिटी खत्म हो गया। व्हाट कैपेसिटी? द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज एनर्जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या? एनर्जी एंड वर्क आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल, दे आर एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग, राइट? सिर्फ इतना है कि एनर्जी और वर्क हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। हम वर्क कब बोलते हैं? जब एक फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। बट एनर्जी यू यूज इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल किलोवाट आवर पता है आपको? व्हाट इज किलोवाट आवर? नहीं पता। तो वर्क और एनर्जी अलग कॉन्टेक्स्ट में मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, then you say the object has kinetic energy, right? If the object is at some height with respect to ground, then it has potential energy. So work and energy, they have same dimensions, same units, but they are used in different context. Good. So ये भी स्केलर, वो भी स्केलर, इसके डायमेंशन उसके डायमेंशन सेम, एसआई यूनिट भी सेम, बट डिपेंड्स। एनर्जी में देर आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। जूल बहुत कम जगह पे यूज होता है। व्हाट आर प्रैक्टिकल यूनिट्स? फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय द वे? ये कन्वर्जन भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं पूछता हूँ हाउ मच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ, ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 1 जूल इज 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, या फिर ईवी, या फिर 1 ईवी इज 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल? दोनों में से कौन सा करेक्ट है? पहला? दूसरा? कौन सा करेक्ट है दोनों में से? क्योंकि दिस इज वेयर यू मेक मिस्टेक्स। डिवाइड होगा, दैट मीन्स यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ हाउ डू यू डिफाइन 1 ईवी। डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन ऐसे करते हो, हमारे पास दो प्लेट्स है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पे था। ये है पॉजिटिव प्लेट, ये सॉरी उल्टा लेते हैं, नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, रेस्ट पे था तो कितना एनर्जी उसका? जीरो। कौन सा एनर्जी जीरो? काइनेटिक। पोटेंशियल भी जीरो, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया नहीं, अब मैं लगाऊंगा। तो what happens is, if as soon as I keep this electron, 1 electron in a potential difference of 1 volt, what will happen? आगे बढ़ेगा। The electron starts moving towards positive plate. It starts moving, मतलब it is gaining energy. कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, एक, राइट? सो 1 electron is moving through a potential difference of 1 volt, right? एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ ना, what is charge in 1 electron? 1.6 into 10 power minus 19, एक वोल्ट, राइट? तो ये आ गया जूल में। तो एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 जूल। अभी उल्टा मत करना। 1 eV क्या करना होता है पता है? 1 eV में सिर्फ E की वैल्यू डालनी होती है, दैट बिकम्स जूल, है ना? 1 eV, E की वैल्यू कितनी? 1.6 into 10 पर माइनस 19 जूल। तो अभी कन्वर्जन फैक्टर उल्टे मत लिखना। तो ये होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे। यू आर एक्सेलरेटिंग 1 electron through a potential difference of 1 volt,
So that is 1.6 into 10 power minus 19 joule. What is 1 kilowatt hour? What is 1 kilowatt hour? बिजली का बिल भरते हो क्या? कभी देखा है? ये रखा है यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है that I have consumed 250 units of energy last month. What is 1 unit of energy? 1 kilowatt hour, right? तो practical units में जब आप electrons की बात कर रहे हो तो you will be talking about EV. If you are using about talking about power consumption बोलते हैं, actually that is energy consumption. So we are consuming energy when I am using electricity here. So 1 kilowatt hour, how much is that? This is 3.6 into 10 power 6 joule. मतलब मैंने 250 यूज किया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 250, इतना मैंने एनर्जी कंज्यूम किया है इस मंथ में. दिस इज व्हाट इट मींस. देन हाउ मच इज 1 कैलोरी? ये तो पता होना चाहिए, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है हमारे यहाँ पे सब. 4.18 जूल रफली. ये कब यूज करते हो? फूड प्रोडक्ट्स. इफ आई ईट, वो बिस्किट के पैकेट पे भी लिखा होता है, अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, पूरा 100 ग्राम खाओगे तब उतना एनर्जी मिलेगा, राइट? गुड. व्हाई डू यू ड्रिंक ग्लूकोज इन समर्स? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कम ग्लूकोज पाउडर, पानी, यू गेट मोर एनर्जी. मत्थे में तो सूरते आ रहा है. एथलीट्स वो हमेशा एक बॉटल गेटोरेड अभी यूज करते हैं. मत्थे में तो सूरते माँ के. इन स्कूल आई यूज्ड टू कैरी दिस ग्लूकॉन डी विथ मी. So it is because you get instant energy from that. Anyways, do you know what is mass energy equivalence? E equal to mv square. MC square. Mass energy equivalence. है ना, दिखता बहुत सिंपल है, सिंपल ही है, but it has got a very deep insight to it. What does this equation tell you? It tells you that energy and mass are one and the same thing. Mass is the measure of how much energy is present in a body. और अगर if there is energy in a body, मतलब mass can be converted to energy and energy can be converted to mass. So energy and mass are interconvertible. Correct. That is why अगर मेरे पास 2 न्यूट्रॉन है और मेरे पास 2 प्रोटॉन है, मैंने इसको डाल दिया एक न्यूक्लियस के अंदर, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इज मास ऑफ दिस न्यूक्लियस should be equal to 2 times of mass of proton plus 2 times of mass of neutron. पर ऐसा नहीं होता. There is mass defect, right? So it is related to this E equal to mc square. तो mass कहाँ गया फिर? Difference in mass is converted into energy and that energy you call as binding energy. क्या हुआ ऐसा कि जब मेरे पास एक न्यूक्लियस में कुछ नहीं था, खाली था, मैंने लाया पहला प्रोटॉन, नो वर्क इज डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फिर मैं ला रहा हूं न्यूट्रॉन, वर्क इज डन अगेंस्ट प्रोटॉन. आप बोलोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में वर्क डन कैसे हो? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. यस, बट न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड क्वार्क्स आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट? तो अब न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन किसी को भी लाने के लिए यू हैव टू डू वर्क. कहां से आया वर्क? अपने आप आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं. देयर इज नथिंग. हु इज डूइंग वर्क? मास का थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, और वो एनर्जी मतलब वर्क, दैट वर्क वाज यूज्ड टू ब्रिंग दीज टू पार्टिकल्स टुगेदर. इसलिए थोड़ा सा मास गायब हो जाता है. कहां गया? कन्वर्टेड टू बाइंड. सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. तो ये पता होना चाहिए. E equal to mc square. इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स नाउ. सो वी डोंट गो इनटू दैट थिंग. We will just focus on what is required. So what is required is, I don't want you to
Tell me what is formula of kinetic energy. You already know. Do you know what is formula for kinetic energy? Half mv square. Do you know how to derive this kinetic energy formula? Yes, पता है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पता है नहीं पता है कोई बात नहीं, पता है फॉर्मूला इतना तो जरूरी है. What is work energy theorem? Kinetic energy finance माइनस क्या? What is work energy theorem? चलो एक बात बताओ. नहीं. Tell me one thing. There is a vehicle which is coming towards me. Okay. Coming towards me मतलब it has got some initial kinetic energy. Right. मुझे उसको रोकना है. What will I do? फोर्स लगाना है और वो फोर्स क्या करेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को रोकेगा. मतलब क्या किया है हमने? वर्क डन. वर्क डन जो हमने किया उसने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी चेंज किया. राइट, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. सिंपल. तो इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equal to the change produced in its kinetic energy. उल्टा भी मान लो, मेरे पास फोर व्हीलर है, खराब हो गया, चल नहीं रहा मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो. अब मैं धक्का मार रहा हूँ, चलने लगा. धक्का मारा मतलब वर्क डन किया. कहाँ गया वर्क डन? टू ब्रिंग चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है. इट्स सिंपल. The work you are doing on a body to bring a change in its velocity and hence in its kinetic energy. That is work energy theorem. Can you prove that work done is equal to change in kinetic energy? Can you prove this? क्योंकि इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स पे क्वेश्चन आया था बीच में. Let us say we have a body, we are displacing this body by a small amount ds by application of force F. Right. This force F will bring in acceleration. What is this small amount of work done to displace the body by a small amount of ds? F ds. F ds. What is F? Mass into acceleration ds. Correct. Then what is A, by the way? What is A? dv by dt. है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ना dv by dt होता है ना वो. राइट, पक्का? अरे तो इतना क्या हो गया उसमें? इज dv by dt. yes or no? A is dv by dt, yes or no? Akansha, acceleration is dv by dt, right? Acceleration A is dv by dt, yes or no? Acceleration A is dv by dt, yes or no? Acceleration A is rate of change of velocity, तो वो dv by dt होता है, not x. A. Can I write this as? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए थियरी में बार बार बोलता हूं, थियरी पता होना चाहिए. सिर्फ dv by dt में से dt को सेपरेट करके ds के साथ जोड़ दिया. What is ds by dt? v. तो dw is mv dv. Correct. This is small amount of work done in displacing a body by a small amount ds, by a small displacement ds. What will be total work done? Integration of dw. क्या था dw? mv dv. पर मैं अभी यहाँ पे फिर जीरो से टोटल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लिख सकता. क्यों नहीं सकता? क्योंकि हमने ds वेरिएबल से dv वेरिएबल में लाके रख दिया इसको. तो इसका मतलब मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल तक.
मतलब बॉडी ऑलरेडी मूव हो रहा था विथ 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, उसका स्पीड चेंज हो गया, तो u से v हो गया, और वर्क डन 0 से w, तो टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू m इज कांस्टेंट, मास चेंज होता है क्या? नहीं. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv? v square by 2 m v square by 2 between limits इनिशियल टू फाइनल, तो वर्क डन इज इक्वल टू, जब मैं अपर लिमिट डालूंगा तो वी स्क्वायर बाई 2, जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो यू स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस इज हाउ यू गेट इंटरमीडिएट स्टेप्स. यू शुड नो व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन था एग्जैक्टली ऑन दिस फॉर्मूला here, right? So I don't remember if it was in NEET or JEE, but एक बार पूछा गया है ये. Good. I'll skip other parts of conclusion. I will come to one of the most important topics now, and that is relation between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. और मैंने ये रिसेंटली आपको फॉर्मूला भी डेवलप करके दिया था. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास किया, मतलब p स्क्वायर बाय 2m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो आई विल डिनोट k काइनेटिक एनर्जी by k, and that is p square by twice m. Okay. Why it is important? It is important, definitely it is important, क्योंकि यहाँ से मुझे मोमेंटम भी मिल सकता है. मोमेंटम p will be under root of 2m times of kinetic energy. अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो ev, 2m ev, है ना, राइट? गुड. मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया ये, we'll talk about that later. Good. Now, why it is so important? Because if you have graphical questions, then various graphs of kinetic energy, because they ask you graphical questions and most of you make mistakes there. So let me ask you a question here, थोड़ा सा इन जगह लगेगा अपने को. If I plot kinetic energy k against velocity v, keeping mass of the body constant, how does this graph look like? सब कुछ यहीं पे है. ke, kinetic energy k is half mv square, मास कांस्टेंट रखा है. Parabola, but which parabola? Parabola in first, second, third, fourth, first, fourth quadrant. First, fourth. Y or X? Y and X. How does Y is equal to kx square looks like? मैंने बताया भी था. Yes, मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसा दो पैराबोला ड्रॉ करते हो, मैंने बोला था कि अज्यूम कर, ये x दिखता है ना, ये x लुक्स लाइक x ना, मैंने बोला था कि यहाँ पे मान लेना when there is no index, मतलब index is 1, तो मैं बोला था ये वैसे मान लेना 1, मतलब this parabola has power 1, मतलब x equal to ky square, first, fourth and second, third. तो अभी y equal to kx square या फिर y equal to minus kx square आया, तो it is 1, 2 और 3, 4, मतलब बेसिकली k equal to some constant into v square is this type of parabola with vertex at origin. ऐसा parabola आएगा वो.
पैराबोला में कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या करना, y और ये x, और रिलेशन क्या है, k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, अब x बटरफ्लाई शेप वो नहीं आएगा। फर्स्ट ग्राफ पहला ही हुआ है, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, हाउ डज द ग्राफ ऑफ k अगेंस्ट v लुक लाइक, दिस इज द ग्राफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। Then next thing is, how does graph of k, again k versus p looks like for m constant? क्या था k in terms of momentum, p square by 2m, m constant मतलब k is proportional to p square, how does it look like, same। वैसे भी लॉजिकली भी सोचोगे ना, मैं अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मोमेंटम बन जाता है, बराबर ना, हाँ तो फिर सेम ही आएगा, वाई विल इट वेरी, तो ये भी आएगा तुम्हारा दिस टाइप ऑफ पैराबोला, राइट। देन हाउ डज द ग्राफ ऑफ मोमेंटम अगेंस्ट मास looks like for kinetic energy constant? Kinetic energy is constant, let's say kinetic energy of a body is always 10 joule, तो क्या आएगा, p square equal to 2mk, m k, k constant, तो p square is proportional to m, मतलब m is proportional to root of p, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, p is proportional to root m। How does this graph look like? आधा पूरा वाला आएगा पक्का। Confidence is lacking, even though you are saying right thing, but confidence is lacking। देखो क्या है, the moment I write p is inversely proportional to root m, वहां पे हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। p मतलब y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m मतलब x, मुझे ऑलरेडी पता है ना ये ऐसा होता है, राइट। सिर्फ हाफ क्यू, हाफ पैराबोला क्यू, नीचे क्यों नहीं जाएगा वो, भाई आपने बोला ना, आप ही ने बोला ना, राइट, इट विल बी लाइक दिस, हाफ, यू आर राइट, व्हाई हाफ, व्हाट इज p स्क्वायर, 2mk, can mass of a body be negative, can kinetic energy be negative, नो, बिकॉज kinetic energy क्या है, हाफ m, पॉजिटिव है m, v स्क्वायर, v नेगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव, इसका मतलब मोमेंटम कैन नेवर बी नेगेटिव हाफ। रीजनिंग समझ में आया, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज, यस दिस इज एक्चुअली दिस इन रियलिटी, अगर मैं p की जगह पे y लिख देता हूं और m की जगह पे x लिख देता हूं, तो दिस इज p स्क्वायर इक्वल टू kx, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू kx, बट मोमेंटम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट विल बी दिस पैराबोला हाफ पार्ट, क्लियर, पक्का, ओके। देन हाउ डज द ग्राफ ऑफ k against m, kinetic energy against m looks like provided p is constant, p is constant, p constant, what is relation between k and m if p is constant, ये इक्वेशन देखो, p कांस्टेंट कर दिया, 2 कांस्टेंट है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन k एंड m,
inverse relation. Inverse relation, what is the graph of inverse relation? As m increases, k decreases, right? Correct. अगेन m कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही रिस्ट्रिक्टेड है. गुड. सो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं इस चैप्टर में से. टेल मी वन मोर थिंग. व्हाट इफ आई प्लॉट मोमेंटम एंड अंडर रूट के. मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि m कांस्टेंट है, तो p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k, है ना? तो फ्रॉम हियर आई विल राइट p स्क्वायर इक्वल टू 2mk. बराबर. गुड. ओके. टेकिंग स्क्वायर रूट, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ k. 2 और m कांस्टेंट, मतलब p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू रूट k. राइट. करेक्ट. उल्टा भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है. आप लिख सकते हो रूट k इज इक्वल टू p बाई सी. 1 अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. व्हाट इज 1 अपॉन 2? 0.5. कांस्टेंट है क्या? यस. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ c डैश p. बराबर. रूट के कहाँ पे है? y एक्सिस पे. p कहाँ पे है? x एक्सिस पे. y इक्वल टू mx. हाउ डज दिस लुक लाइक? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हाँ, तो फिर इतना क्या सोचना है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. एक इक्वेशन था, एक कौन सा? हाफ mv स्क्वायर. उस पे से कितना कुछ कर रहे हैं हम लोग. वी आर मेकिंग. अभी तक तो 2-3 इक्वेशन बन गए, 5 ग्राफ हुए. ये और एक ग्राफ है, और एक ग्राफ भी है, वो भी कर लेते हैं. गुड. गुड. So you have kinetic energy, you have P again m is constant. So let me first make some space here to write down constraints. Constraint मतलब conditions basically. So I'll just move this also down here so that there is no mixing up of things. Okay. So m मैंने कर दिया constant. तो अभी तो सीधा सीधा है यहाँ से, है ना? P square is proportional to K. अब तो बता दो, अब बता दो. पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk. बस अब बता दो. हाँ, दिस इज लाइक दिस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो ये भी इजी था. ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो यू नीड टू नो दिस. राइट. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस, stopping of vehicle by retarding force. तो stopping of vehicle by retarding force. उसमें पहला निकालना है हमको व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. फिर आप बोलोगे अभी हमने पहले भी स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला है. याद है क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन वी लर्नड 1D मोशन? हाँ, क्या था बताओ. u square by 2a. u square stopping distance, final velocity 0. b square equal to u square plus twice as. 0 equal to u square minus twice as because retarding था. तो s equal to u square by 2a. करेक्ट. तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? हाँ, फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं की अभी तक. वहां पे भी स्टॉपिंग था, यहाँ पे भी स्टॉपिंग था. क्या डिफरेंस है?
we are studying this under what topic? Work, energy, power and collision. अभी power और collision की तो बात ही नहीं हो रही है. We're talking about work and energy. मतलब in this case you will be writing stopping distance in terms of initial kinetic energy. Simple. है वही. It's the same thing. So can you tell me what was work energy theorem? W is equal to delta K, change in kinetic energy, that is equal to half mv square, right? डिपेंड करता है. पहले बॉडी रेस्ट पे था, मैंने उसको धक्का मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गया. उल्टा ले लो, गाड़ी मूव हो रहा था विथ सम वेलोसिटी v. आई एम स्टॉपिंग इट, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. मतलब एक तो 0 है. तो यहाँ पे स्टॉपिंग की बात है तो मान लो इनिशियली इट वाज मूविंग, देन वी आर स्टॉपिंग इट एंड वी आर लुकिंग एट मैग्नीट्यूड. क्यों? क्योंकि फिर गड़बड़ क्या होगी, स्टॉपिंग है ना, ठीक है. तो हम बोलेंगे फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक. नॉर्मली आप ऐसे लिखते हो नॉर्मली, राइट? बट फाइनल इज 0 एंड माइनस इनिशियल वाज हाफ mv स्क्वायर, बराबर. देन यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड हियर. तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आई विल बी राइटिंग डाउन दिस एज हाफ mv स्क्वायर, राइट? तो what is work done in terms of distance, stopping distance? Force into distance, बराबर, is equal to half mv square, बराबर. force, कौन सा force? retarding force, because this force will cause retardation into distance. कौन सा distance? stopping distance is equal to half mv square is kinetic energy. तो मुझे मिल गया stopping distance is equal to kinetic energy by retarding force, बराबर. मतलब I can write the equation as k, which is mv square by 2 kinetic energy upon f. ये आ गया आपका stopping distance, मतलब ये आ गया k by 2f, k by f मतलब, करेक्ट. तो ऐसा आप कर सकते हो. मैं बाद में फिर f के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बट दैट इज ओके, वी डोंट नीड इट नाउ. आई वांट टू नो हाउ मच वाज द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी. तो स्टॉपिंग टाइम, अगेन I want this stopping time either in terms of kinetic energy or in terms of momentum and force, or in terms of mv and f. How do you find out stopping time? बताओ ना, बताओ. उससे बेटर भी एक चीज है. What is impulse? Force into time. मुझे गाड़ी को रोकना है तो क्या उसको इन्फिनिट टाइम तक कर दूंगा? एक बार रुक गया, I will stop applying force, बराबर. मतलब I can write this stopping force in terms of impulse. What is impulse? Force into t. What is that, by the way? Change in momentum. What is change in momentum? Final minus initial. Final momentum is 0. Initial was something p. I am taking only magnitude. मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ magnitude wise. Magnitude wise. Magnitude wise, I can write down force into time taken to stop is equal to initial momentum. मतलब stopping time t is initial momentum upon force, मतलब m into initial velocity v by f. मिल गया stopping time, right? Clear? Okay. Then we can compare stopping distance of two vehicles
when you apply the same amount of force on both of them. So you can compare. Okay, so let's compare. We have two vehicles of masses m1 and m2 moving with speeds v1 and v2, and I want to stop both of them and applying same amount of force. Same amount of force लगाया मैंने. So what will be the ratio of S1 and S2? Half correct. You are correct, but half correct. You are correct, but 1/4, 3/4 correct now. You are wrong now because forces are same. Look here, look. Exactly, look here. S is proportional to mv square by 2f. F constant कर दिया तो S1 by S2 is m1 v1 square by m2 v2 square. What are stopping time ratios? Stopping time ratios बता दो. m1 v1 upon m2 v2. फिर अगर दोनों का मास सेम हो तो मास कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम हो तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा. तो roughly I am talking about this. Details I will not go into it because that will be part of numericals. Then we will not talk about potential energy here. Potential energy की मैं बात करने ही नहीं वाला हूं मैं. हमको सिर्फ potential energy में जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है मैं उतना ही बताऊंगा, and that is you can define nature of force, whether the force is attractive or repulsive depending on potential energy. So attractive force ये important इसलिए है because you can tell from the graph of potential energy whether the force is attractive or repulsive. Okay, do you know how to do it? पता है? अच्छा, तो नहीं पता. ग्रेविटी की बात कर लेते हैं. ओके, हमारे पास अर्थ एंड मून सिस्टम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर दे बोथ attracting each other or repelling each other? Earth and moon attract क्योंकि gravitational force is never repulsive. Clear? अब मैंने मून को थोड़ा सा दूर सरका दिया अर्थ से. What happens to potential energy of the moon? Yeah, in general, potential energy of the system. As x increases, this potential energy decreases, increases. Sure? Exactly. एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर उठाना मतलब मून तो अर्थ से दूर करना इक्विवेलेंट केसेस है. So as the distance between two objects increase and if potential energy is increasing, then the force is attractive. Simple हो गया ना ये तो एकदम. Right. So attractive force in terms of potential energy is as x increases, मतलब distance between the two objects increases, u increases. Right. So what can you say about du by dx? Slope of u and x. This is, अरे बाबा, how will this look like? आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, x increase हुआ तो u increase हुआ, बराबर. This is what you said. x increase हुआ तो u increase हुआ. So this is also what it means. I can also have this, correct? है ना? x increase हो रहा है, u भी increase हो रहा है, बराबर. What is du by dx?
Okay. Slope of this graph, very good. What is slope of this graph? हाँ ठीक है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. So you can say in such cases, मतलब when slope of potential energy against distance graph turns out to be positive, then the force is attractive. Good. This is how you fetch physics out of graphs. So I'll tell you one more thing. Repulsive force. Okay, so if I do this now, I have potential energy U, I have this as X. क्या है ये? As बताओ, as X increases U increases? नहीं. As X increases U decreases. तो ग्राफ्स अच्छे से पता होने चाहिए. X बढ़ रहा है, U की वैल्यू कम हो रही है, right? Slope is negative. Good. So if as X increases, U decreases, which means du by dx is negative, which means force is repulsive. याद रहेगा? पक्का? क्वेश्चन डालूंगा मैं एग्जाम में. Good. What is zero force? How does zero force will look like graphically? और ये ग्राफ आप बुक में नहीं दिए हुए ये. You don't find this in modules also. You need to understand. Slope zero होगा. Very good. तो X and U. Slope is zero for this line or this line? Second line. Right? So when potential energy remains constant, even if X increases, U constant, or anyways आपको पता है derivative of a constant quantity is zero. So that means there is no force acting on the body. Potential energy is fixed. Good. Then, do you remember, or I don't know if you were taught or not, by any chance, what are different types of equilibriums? सुना है क्या? Stable equilibrium. बताओ तो फिर, सुना है तो बहुत अच्छी बात है. If you know this, what is stable equilibrium? If you say yes, so you are stuck. सर अभी तक से कहना है लेकिन वो बॉल को पता बॉल अगर बॉल को थोड़ा सा पुश करूं तो वापस से वो उसकी ओरिजिन. Exactly. हम एक बाउल ले लेते हैं और यहाँ पे एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल. कैन यू टेल मी what is the potential energy here? Minimum, maximum, zero? Minimum Q. हाइट जीरो है ऐसा तो ठीक है, बोला तो भी चलेगा. इफ दिस इज ग्राउंड लेवल, यही एक ऐसा पॉइंट है which is at the minimum distance from the ground. मतलब when you talk about stable equilibrium, first thing should be the object should be in minimum potential energy configuration, right? तो अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, क्या होगा? The object will go back to its equilibrium position. मतलब क्या? The object will try to achieve minimum potential energy configuration.
such an equilibrium is called as stable equilibrium. Correct. Good. Then you can write this in terms of course, forces. So F is equal to minus du by dx initially 0, क्योंकि इनिशियली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब मिनिमम मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, है ना। मैंने बोला वेलोसिटी इज मिनिमम विच इज -5, मतलब कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. गुड. देन only in this case, if you take second derivative of potential energy with respect to distance, it turns out to be positive, right? So in stable equilibrium, du by dx 0 है, but d2u by dx square positive है. This is stable equilibrium. So second, unstable equilibrium. कभी हिल के टॉप पे गए होंगे और एक बॉल को यहाँ पे रखा पहले, it is at maximum height, right? Correct. So potential energy is maximum. If I slightly displace, क्या होगा, गया तो गया, वापस नहीं आएगा, right? So when an object is displaced from its initial configuration, it never goes back to its equilibrium position. Such a configuration is called as unstable. It will never come back to that position of stability, इसलिए unstable है. So in this case also F is minus du by dx, that is equal to 0. But only thing is that in this case you will have d2u by dx square to be negative. Correct. What is neutral equilibrium? What is neutral equilibrium? टेबल टॉप पे बॉल रखा, कहीं भी लेके जाओ, जहां है वहीं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है. Keep the ball wherever you want. It is always in a state of minimum potential energy configuration. It doesn't move. ना दूर जाएगा ना पास में आएगा. It will remain wherever it is. इसका मतलब क्या? Again in this case, force is minus du by dx, which is again 0. But d2u by dx square will be equal to नहीं, शून्य, 0. मतलब बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट, आपको ये समझो कि ये जब मैं बोलता हूँ du by dx is positive, मतलब बेसिकली यू आर लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ du by dx अगेंस्ट x अगेन. सो पॉजिटिव मतलब ये ऐसा ग्राफ आएगा, du by dx अगेंस्ट x का ग्राफ देख रहा है, मतलब u dash. What is dash? First derivative. So looking at first derivative graph. Mathematics anyways, right? If you are under impression कि हम लोग बहुत theory कर रहे हैं तो ये गलत है, because these are all numericals. ऐसे question numerical ही बन के आते हैं. जैसे कि do you remember Hooke's law? छोड़ो Hooke's law. Anyways, do you remember simple harmonic motion? Do you remember simple harmonic motion? Yes. What is the equation for potential energy stored in a spring in case of simple harmonic motion? Start ही वहां से करते थे आप चैप्टर का, half kx square. तो we will be talking about potential energy of a stretched string या फिर compressed string. Potential energy of a stretched
spring. So I'll ask you more questions now. क्या था कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस पर एक मास है, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. मैंने इस मास को, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया एंड स्ट्रेच करने के बाद ये स्ट्रेच हो गया और ये न्यू पोजीशन पे आ गया एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज x. In this case, what is the force acting on the mass? Force minus kx, where k is called as spring constant or force constant, right? Why minus? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अगर मीन से अवे है तो फोर्स मीन के टूवर्ड्स होगा, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन, मतलब ये फोर्स क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जब भी ये वर्ड आया रिस्टोर, यू गो इनटू द डोमेन ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे टू सम एक्सटेंट, ऑफ कोर्स. करेक्ट. Let me ask you a question. Can you derive equation for potential energy? She said potential energy stored in this case is half kx square. How do you get to this equation? Simple है, work energy theorem simple है. The work done to displace the object from its mean position to this position is force into displacement. Small ना, पहले dx फिर dx फिर dx, मतलब 0 से x for total work done. Correct. What was force here? अभी आपने मैंने कुछ नहीं बताया, आपने बताया ना kx, you told me kx dx. Correct. तो ये k outside. What is x dx integration? X square by 2, right? Where did this work go? Energy can neither be created nor be destroyed. कहाँ गया फिर? It is stored in the spring in the form of potential energy. तो जब भी मैंने मास को स्ट्रेच किया तो वर्क डन जो किया था मैंने, it is stored in the form of potential. जब रिलीज करूंगा, that potential will be converted to kinetic. तो वर्क एनर्जी थ्योरम का और एक मतलब होता है, वर्क डन is equal to kinetic energy, right? और change in kinetic energy, but it is also equal to change in potential energy. क्योंकि हमने स्ट्रेच किया, कहाँ गया वर्क, कहाँ गया, stored in the spring, फिर रिलीज कर दिया, so that will again become kinetic. So this is what it means. आ गया कि x square by 2. Good. ये सारे क्वेश्चंस इक्वेशन लगने वाले हैं हमको. By the way, you already know what is kx, है ना? What is kx? What is kx? Force. F, restoring force, x by 2. तो आपको u और f का भी रिलेशन मिल गया. तो you also have this relation that we will do while doing numericals. Do you remember formula for kinetic energy in simple harmonic motion? 1/2 k square k into a square minus x square. Do you remember total energy in this case? हाँ, मतलब कितना? x नहीं आता उसमें, ऑलवेज कांस्टेंट. और मैं a कभी भी कैपिटल डिनोट करूंगा बिकॉज नॉट टू कंफ्यूज विद एक्सेलरेशन, राइट? डू यू रिमेंबर ग्राफ ऑफ एनर्जीज? देखो अभी वर्क पावर एनर्जी बात की तो इसलिए हमको सिंपल हार्मोनिक भी लेना पड़ गया. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आप एनर्जी प्लॉट करते हो, यहाँ पे आप x प्लॉट करते हो, और आपके पास इक्वेशंस तो है ही दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल के. तो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल फर्स्ट. व्हेन इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो? x0, मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम? x equal to 8.
व्हेन x इक्वल टू a, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या फिर नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जीरो कब होगा? यहाँ पे। मतलब हाउ डज इट वेरी? इट वेरीज लाइक दिस। पैराबोला है, पैराबोला है ना, ई u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला, राइट? गुड। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? इज मैक्सिमम एट मीन। देखो क्या है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, हाइट जीरो हो जाता है, क्योंकि आप मीन से स्टार्ट करें तो एक्स जीरो मतलब पोटेंशियल जीरो, मतलब वॉट एवर एनर्जी अ पार्टिकल हैज एट द मीन पोजिशन इज ओनली काइनेटिक, एंड वॉट एवर एनर्जी द पार्टिकल हैज एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन इज ओनली पोटेंशियल, मतलब दैट विल बी एन इन्वर्टेड पैराबोला लाइक दिस। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, और जो रेड में है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? क्लियर? गुड। इफ इट्स क्लियर, क्लियर, देन ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करेंगे, तो आई विल नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट नाउ। एंड कल तक हो जाएगा, डोंट वरी, कल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, बिकॉज अभी we need half hour more to complete theory, and then we will do numericals tomorrow. Then next thing, work done in pulling the chain, pulling the chain। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल टॉप है, उसके ऊपर एक चेन है, समथिंग लाइक दिस, राइट? अब ऐसा है दैट देयर इज सम फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ which is hanging, fraction of total length L by n, this is fraction of total length which is hanging। हमने पहले इसको L डैश बोला था, बाद में इसको L माइनस एक्स बोला है, बात तो वही है ना, क्यों? L डैश को मैंने L माइनस एक्स बोला, x क्या था? जो टेबल के ऊपर है, हाँ, तो L माइनस एक्स मतलब हैंगिंग है। मैं मान लेता हूँ कि 1/3 पोर्शन जो है, 1/3 पोर्शन जो है वो हैंग हो रहा है, मतलब 2/3 ऊपर है ना, मतलब 2/3 ऊपर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? L माइनस 2/3 ऑफ L, मतलब 1/3 ऑफ L लिख सकते हैं, मतलब L by 3, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, L by n, सम फ्रैक्शन ऑफ चेन इज हैंगिंग। तो देखो डिपेंड करता है बुक्स टू बुक, टॉपिक टू टॉपिक, आपके ऊपर है आप कैसा नोट करते हो। बहुत सारे बुक्स में ऐसा ही बोला होगा, लेट दिस इज y, क्योंकि y एक्सिस में है, करेक्ट? तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, बाकी अपने आप होता है, फ्लो अपने आप आता है। अब ऐसा है, मुझे इस चेन को ऊपर पुल करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल करना है। व्हाट विल बी वर्क डन? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी? एटलीस्ट कैन यू टेल मी, मुझे dy से ऊपर पुल करना है, so what will be small amount of work done to pull the chain by a small amount dy? इजी है, इजी है। अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? छोड़ो एनजी, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? बस खत्म, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हाट इज फोर्स? अब बोलो एमजी, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, mg आएगा, तो टोटल मास लेंगे क्या चेन का हम लोग, तो my into g into dy, right? Of course negative sign है, where small m is not total mass, small m is mass per unit length। ऐसा है, ये जो small m है ना, मैं लिख देता हूँ, that is total mass upon total length of chain। तो
मास पर यूनिट लेंथ है। कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन, इसलिए मैं क्या करता हूं ना, आई डोंट यूज दिस एट ऑल। मैं इसलिए इसको हमेशा सिग्मा बोलना पसंद करता हूं, बिकॉज देन मास और मास पर यूनिट लेंथ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विथ अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। वाई इज द लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग, तो कितना चेन हैंग हो रहा है, लेंथ बराबर इनटू मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ इनटू मास पर यूनिट लेंथ इज मास इनटू जी, वेट, इसका वेट ऑफ हैंगिंग चेन, और कितना ऊपर ले रहे हो आप, dy से, तो dy, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, समझे यहां तक? व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ओवर ऑल द स्मॉल वर्क डन। पहले dy से ऊपर लिया, फिर dy से ऊपर लिया, फिर dy से ऊपर लिया, करेक्ट। तो टोटल माइनस बाहर सिग्मा वाई जी डी वाई, करेक्ट। ऐसा छोटा छोटा, मतलब कब तक उसको ऊपर लेते रहोगे चेन को, y टू 0। ये आपका टेबल से नीचे y इतना पोर्शन नीचे था, ऊपर लिया ऊपर लिया ऊपर लिया, कब तक, जब तक y के अलॉन्ग 0 नहीं हो जाता, तो y टू 0, राइट। ओके, बोर हो गए आप सब, कोई बात नहीं, होना पड़ेगा। माइनस सिग्मा कांस्टेंट जी कांस्टेंट, और मुझे माइनस पसंद नहीं है, तो मैं लिमिट्स को उल्टा करना बेटर समझता हूँ। इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ये जी था, so what is work done here is sigma g y square by 2. What is sigma m by l g, what is y, l square by n square into 2, एक एक गया, so work done in pulling the chain up is mgl, capital M, gl upon 2 times of n square। आ गया। अब इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द चेन इन लिविंग द टेबल। चेन पूरा का, समझो चेन का L by nth पार्ट was on the table, was hanging down, और बाकी का पार्ट टेबल पे था, अभी पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द force of gravity such that the chain leaves the table। असाइनमेंट, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, कोशिश करूंगा, अदरवाइज यू विल हैव टू डू इट। Thank you. 2 by 3 आएगा। 2 by 3 नहीं आएगा, यू हैव टू सी हाउ मच फ्रैक्शन इज हैंगिंग, कितना फ्रैक्शन हैंगिंग था, L by n, बाद में पूरा पूरा नीचे गिर जाएगा, मतलब कितना, पूरा L का L नीचे आ जाएगा। यू टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, you have to think in terms of that and solve। By the way, how do you solve it, how do you solve that thing? फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है मतलब मूव हो रहा है, मूव हो रहा है मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल। फॉल होगा ना, हाइट से नीचे आ गया ना, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मुझे सॉल्व करना है, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। इसमें भी होगा कहीं तो, पेज नंबर 68 पे है, वो कर लेना आप, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउ। बस लास्ट के 2 टॉपिक है, थियोरी एंड देन न्यूमेरिकल्स, लास्ट 2, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कवर हो गए। देन पावर, पावर पे मैं ज्यादा कुछ बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि हो गया हमारा सब। व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, हाउ डू डिफाइन पावर, पावर कैसे डिफाइन करते हो आकांक्षा, पावर कैसे डिफाइन करते हो? पावर नहीं पता तो इंटेंसिटी भी नहीं समझेगा आगे जाके। W by T, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ, राइट।
अभी हमने वर्क डन देखा सब, तो सिर्फ डिवाइड बाय टी करते जाओगे तो मिल जाएगा. लास्ट थिंग, लास्ट, कोलिजन. ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट कोलिजन्स? क्योंकि दिस इज लास्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग टुडे. ऐसा करने का मतलब है देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कोलिजन. एक्चुअली तीन है. इलास्टिक, inelastic, perfectly inelastic. Correct. Can you tell me what do you mean by elastic collision? Elastic. velocity for collision. You cannot talk in terms of velocity. क्यों नहीं? इसलिए नहीं, इसलिए नहीं. मैं अगर एक कंटेनर में 10 to the power 20 molecules of gas लेता हूँ. Molecules are in random motion. Why? Owing to the heat that they are receiving from the surrounding. टेम्परेचर है तो वो हीट जाएगा, वो हीट जाएगा. आपके पास पैसा आगे जगह पे बैठते कि हम नहीं बैठते, जाते हैं घूमने फिरने. तो सेम इज विद गैस मॉलिक्यूल्स. इफ दे हैव एनर्जी from the surrounding, they're receiving heat, they're moving, they're colliding, they are transferring velocity from one molecule to other. But overall, when they collide with the walls of container, they don't transfer their energy. तो इसका मतलब ओवरऑल भले एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेंज हुआ, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. So when you talk about elastic collision, you never talk about velocities, you talk about kinetic energy. What is conserved? Elastic collision में what does not change? Kinetic energy. By the way, collision elastic हो या inelastic हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है दोनों केसेस में. मतलब m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 if you're talking about collision of two particles moving along same line. ओके, बताऊंगा मैं आगे वो. In elastic, kinetic energy is conserved, and in inelastic, kinetic energy is not conserved. Correct? Then, what is the difference between inelastic and perfectly inelastic? छोटे थे, जब आप छोटे थे, आपसे पूछ सकता हूं, इनसे नहीं पूछ सकता मैं. मार्बल्स कभी खेले है क्या? हाँ, तो एक मार्बल ने दूसरे मार्बल को हिट किया, फिर क्या होता है उसके बाद? एक एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरा दूसरे. काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू अदर एंड बोथ आर सेट इनटू मोशन. बराबर. अब मैंने एक मड का बॉल लिया, मड दीवार पे दे मारा, क्या होगा? स्टिक हो जाएगा. मतलब दोनों में ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. बट व्हाट इज हैपनिंग इज आफ्टर कोलिजन इफ द टू बॉडीज मूव सेपरेटली, दैट इज inelastic. After collision, if the two bodies combine and move together, that is perfectly inelastic. Correct? और ये elastic, inelastic, perfectly inelastic, we can write in terms of a coefficient that is called as coefficient of restitution. हम देखेंगे वो. By the way, I will just tell you how to find equations, and then I will write down equations. We will not derive.
लेट्स गो विथ इलास्टिक फर्स्ट। देखो मैंने पहले ही बोला कोलिजन कोई भी हो, पहले तो मैं लेता हूं बॉल नंबर 1 मूविंग विथ वेलोसिटी u1, बॉल नंबर 2 मूविंग विथ वेलोसिटी u2, दिस इज बिफोर कोलिजन, है ना। दिस इज सिनारियो बिफोर कोलिजन। And after they collide, they are moving with different velocity. Masses definitely remain same, m1 and m2. This is after collision. हम जब इक्वेशन डिराइव करते हैं लिखते हैं दे आर अंडर वन स्ट्रिक्ट कंडीशन। फर्स्ट, दे आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। दूसरा, मैं चल रहा हूं, मुझे आगे मेरा दोस्त दिखा, उसको जाके धक्का देना है, पकड़ना है, मारना है। What should be the condition? वो भी आगे जा रहा है, मैं भी आगे जा रहा हूँ। Exactly. तो जो भी हम लोग कंडीशन डिराइव करेंगे, इट इज अंडर दिस इक्वेशन डिराइव करेंगे, इट इज अंडर दिस कंडीशन दैट u1 should be greater than u2 or both objects are moving along same straight line. They are not even moving, I mean, they are moving along same straight line in a given direction. They are not even moving in opposite direction. सबसे पहले you should know initial momentum is equal to final, which implies m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. दूसरा, kinetic energy is conserved, मतलब initial kinetic energy is equal to final kinetic energy, मतलब half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. अब ये दो इक्वेशन के साथ आपको जो मैनिपुलेशन करना है, अलजेब्रा जो करना है वो करो। उसके बाद सब करने के बाद 10 स्टेप करने के बाद आपको मिलेगा व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि कभी याद रखने के लिए ट्रिक हमने देखा नहीं, उसके लिए होती है ट्रिक। दोनों केसेस में दो टर्म आएगा, बीच में प्लस ही रहेगा। मैं जब v1 लिख रहा हूं तो मैं m1 प्लस m2 लिखूंगा, m1 प्लस m2 लिखूंगा। जब मैं v2 लिख रहा हूं तो m2 प्लस m1 लिखूंगा और m2 प्लस m1 लिखने वाला हूं। मुझे पता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 प्लस m1, मुझे पता है, फिर भी इवन देन आई एम डूइंग दिस, राइट? गुड। तो जब हम v1 की बात करते हैं तो पहले टर्म में u1, दूसरे टर्म में u2। जब हम v2 की बात करते हैं पहले टर्म में u2, दूसरे टर्म में u1। फिर मैंने ये प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जहां पे u1 है मतलब पहला टर्म है, वहां पे m1 माइनस m2, और इसको m2 प्लस m1 क्यों लिखा अभी गेस? क्योंकि m2 माइनस m1 और u1 का काम हो गया ना, u2 है ना यहाँ पे, तो 2m2 u2 2m1 u1, ये बन गए इक्वेशंस। अब स्पेशल केसेस, क्या क्या स्पेशल केसेस? दूसरा ऑब्जेक्ट वाज नॉट मूविंग, सिर्फ पहला ही मूव हो रहा था, राइट? नॉट इक्वल टू 0। और क्या स्पेशल केसेस? m1 इक्वल टू m2, राइट? ये सब डाल सकते हो आप, फिर प्रूव कर सकते हो कि अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन and also under condition that m1 equal to m2, you can say v1 equal to u2 and v2 equal to u1। मतलब क्या हुआ इसका? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, है ना? सेकेंड का इनिशियल पहले का फाइनल बन गया, पहले का इनिशियल सेकेंड का फाइनल बन गया। तो दिस विल बी ऑल डन इन न्यूमेरिकल्स। देन I am not going to talk about inelastic collisions here for the time being, but I should define what is coefficient of restitution.
velocity of separation, मतलब velocity after collision, क्योंकि after collision they are separating, as she said u1 is greater than u2 following each other, one approaching other, उसको क्या बोलोगे, velocity of approach. तो coefficient of restitution is velocity of separation, मतलब after collision of course upon velocity of approach. और पता होना चाहिए सेपरेशन मतलब आफ्टर कोलिजन v2 is greater than v1, तो v2 minus v1 upon u1 minus u2. अब यहां से आप बता सकते हो E की वैल्यू, you can tell everything depending on value of E. If E is equal to 1, velocity of approach is equal to velocity of separation, मतलब elastic collision. Value of E greater than 0 and less than 1 in elastic collision. Value of E equal to 0. E equal to 0 मतलब E equal to 0 मतलब this, मतलब v2 minus v1 equal to 0, मतलब v2 is equal to v1, मतलब both objects stuck together moving with common velocity. So E equal to 0 means perfectly in elastic collision, perfectly in elastic collision, right? Okay, so we are done with theory of W, P, E and C.